converging lens is something like this. This is also known as convex lens, right? Okay, and we have something of this sort, right? And what happens when there is a parallel beam of light? If there's a parallel beam of light, right, like this, like this, like this is going to converge at a point all the way here, you see. And we will talk about the different, things such as focal length, the principal focus, optical center, and stuff like that. The arrows are very important in drawing the ray diagrams because ये आपको बताता है कि रे किस तरफ जा रही है, ठीक है। ये जो आपको एक लाइन नजर आ रही है इसको हम रे कहते हैं, और बंडल ऑफ रेज को हम बीम कहते हैं। ये जो पूरा बंडल है इसको हम बीम कहते हैं। मतलब ये सारा के सारा जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ बीम, ठीक है। एंड दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा, डाइवर्जिंग लेंस जो होता है, डाइवर्जिंग लेंस, इट इज डिराइव फ्रॉम डाइवर्ज, रेज डाइवर्ज होती हैं, ठीक है। सो इट इज ऑफ दिस सॉर्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज कनकेव lens, right? And basically what happens is that the rays, they are going to go like this all the way, this, this is what we call a diverging lens, right? और इसकी image जो बनती है वो virtual बनती है, and we see that how this happens. इसको हम वापस extend back करेंगे और ये आपके पास जो है वो यहाँ पे आके इमेज बन जाएगी। You will see that later on in this chapter. अच्छा जी, for the convex lens or converging lens, we have certain terminology to explain, right? For example, this is the lens like this, and we have a bundle of rays which is coming like this, all the way like this. This point here, which is at the very center, is known as optical center. जो बिल्कुल center पे point होता है इसको हम कहते हैं optical center. This point here is known as the optical center of the lens. ठीक है। अच्छा, ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है, ये वाला जहां पे ये मीट कर रही है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस और द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकल पॉइंट तक, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। This length from here till here, from the optical center to the principal focus, is known as focal length. We call this focal length. अच्छा, ये इस तरफ भी होती है, राइट साइड पे भी, और लेफ्ट साइड पे भी इक्वल लेंथ होती है, ठीक है। जितनी लेंथ यहाँ पे होगी उतनी लेंथ यहाँ पे होगी। समझ आ रही है? और आगे जाके हम इसको देखेंगे कुछ रे डायग्राम्स में कि ये अगर लेंथ ट्वाइस हो जाए तो उसको हम 2f कहते हैं, ठीक है। अगर ये लेंथ ट्वाइस हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, तो दिस इज कॉल्ड 2f, right? And we'll see that in a lot of questions. ठीक है। अच्छा, ये जो जहां पे ये रे पास कर रही है सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर के, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। We call this principal axis, right? And you should know that this here, the plane where the image is formed is known as the focal plane. We call that the focal plane of the, ठीक है, इसका लेंस का फोकल प्लेन आपके पास बन जाएगा। Is that clear? So I'm going to define these things here. What is focal length? You should know that it is the distance between the optical center of the lens till the principal focus. It is the distance between the optical center of the lens to the principal focus. अच्छा, अब जब भी कोई आपने रे डायग्राम ड्रॉ करनी है तो उसके 3 रूल्स अगर आपको याद रहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस के लिए अगर आप ये 3 रूल्स स्पेशली याद रखेंगे तो आपकी कोई भी रे डायग्राम बन सकती है, राइट? एंड आई एम गोना टॉक अबाउट दीस 3 रूल्स नाउ, राइट? अच्छा जी, ये 3 रूल्स दैट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम गोना टॉक अबाउट देम, राइट? 3 रूल्स फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम्स. Rule number 1 is, if you have here a lens, for example, like this, and you have here the principal axis, and this f is the principal focus, right? This is also the principal focus here, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे अगर लेंथ f बन रही है ऑप्टिकल सेंटर से,
तो फॉर एग्जांपल ये लेंथ आपके पास 2f बनेगी, ठीक है, इसी तरह से ये भी f है और ये 2f बनेगी, राइट। अच्छा, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, ठीक है, बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, तो वो पास करेगी विदाउट एनी बेंडिंग, विदाउट एनी डिविएशन. So for example, a ray which is passing like this, it passes without bending. A ray which is passing like this through the optical center, it passes without bending. And a ray which is passing like this, it passes without bending. Any ray passing through the optical center of the lens will pass without any deviation, without any bending. Is that clear? A ray passing through the optical center of the lens will pass without any deviation, okay, without any bending, right? A ray passing through the optical center of the lens will pass without any deviation or any bending. Rule number 2. अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताना था कि एरोज, फिर दोबारा रिवाइंड करवा रहा हूँ, एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. Rule number 2 is, if we have here a lens like this, and you have here the principal axis, and again this is f, and this is also f, और वो twice 2f हो जाएगा, right? अगर f फोकल लेंथ f है तो twice the focal length is 2f. अच्छा, अगर यहाँ से जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल कोई अगर रे जा रही होगी, फॉर एग्जांपल ये रे जा रही है इसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, दिस वाज द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे पैरेलल जा रही है तो क्या होगा? इट विल पास थ्रू f आफ्टर रिफ्रैक्शन. It will pass through f. A ray which is parallel to the principal axis is going to pass through f. It will refract here. It will refract here through the lens, because lens can be, you know, it has a certain refractive index. It will refract the light, right? So what's going to happen is that it's going to pass through f. इसी तरह से अगर नीचे से कोई रे गुजर रही है तो वो भी क्या करेगी? वो भी आप देखें कि f से पास करेगी, अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के. समझ आ रही है? अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इट्स गोइंग टू पास थ्रू f, थ्रू द ऑप्टिकल, थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस. और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रे बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है तो वो तो बिल्कुल विदाउट एनी बेंडिंग पास कर सकती है. A ray which is parallel to the principal axis will refract from the lens to pass through f. We call this rule number 2, as we've discussed. So a ray which is parallel to the principal axis is going to pass like this. Rule number 3. Rule number 3. We have here a lens again, and a ray which is passing parallel to the, ये जो ये आपके पास simple principal axis मैंने बना दी है, और I've written here f, ठीक है, this is also f, and remember that a ray which is passing through f, a ray which is passing through f like this will refract to pass parallel to the principal axis. इस तरह से हो जाएगा. ये उसका बिल्कुल ही उल्टा केस है. जो सेकंड केस था, मतलब उसके ऑपोजिट हो रहा है. अगर कोई रे एफ से पास कर रही है, देखिए यहाँ से रे लेंस से पास करके एफ के अंदर जा रही थी, यहाँ पे ये एफ से पास करती हुई आगे स्ट्रेट हो गई. Is that clear? So what is happening is that the ray is passing like this, and then it is passing parallel to the principal axis. And this is case number 3. And all these 3 cases will help you construct an image. If you remember these 3 rules, you can draw any image of a converging lens. So a ray passing through f will refract to pass parallel to the principal axis. Let us construct a ray diagram using these rules, right? We have here a lens like this, and this point is f, this point is also f. अच्छा, twice the length is 2f. अगर ये focal length आपके पास f आ रही है यहाँ पे, तो ये अगर twice हो जाएगा तो क्या होगा? ये
This is going to be 2f, right? This entire length is going to be 2f. और यहाँ से लेके यहाँ तक, this is f, this is 2f, और इसी तरह से उस तरफ भी यही होगा. अगर यहाँ से लेके यहाँ तक it is f, then twice the length is going to be 2f, right? Now, for example, there is an object here which is between f and 2f, right? इसका distance है f और 2f के दरमियान, right? ये जो f point, ये जो आपके पास इसकी length f है और 2f है उसके दरमियान ये इसका distance है. For example, this is an object here. So the first case is, the first rule is that a ray passing through the optical center will pass without bending. So I'm going to draw a ray like this, right? बिल्कुल straight पास करके ही रूल नंबर 1 अप्लाई किया मैंने. रूल नंबर 1 अप्लाई किया कि अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है और एक कोई रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट एनी डिविएशन. अच्छा, रूल नंबर 2 अगर आप देखें यहाँ पे, रूल नंबर 1 तो ये होगा, ठीक है. रूल नंबर 2 अगर आप देखेंगे कोई अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो एफ से पास करेगी. अगर वो पैरेलल है तो इट्स गोना बी लाइक दिस. इफ इट इज पैरेलल, it's going to pass through f like this, and you see it's going to intersect this ray here and you will get an image which is like this. ठीक है, ये रूल नंबर 2 से हमारे पास इमेज बन चुकी है, राइट. लेकिन रूल नंबर 3 बहुत हेल्पफुल होता है और कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि रूल नंबर 3 यूज करना पड़ जाता है आपको, and we'll see that. But here we can use rule number 3 to check whether our answer is right or not, right? So rule number 3 was what? That if a ray is passing through f, it will refract to pass parallel to the principal axis. ये देखिए, अगर f से पास करे तो parallel हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे अगर इसको f से पास करवाऊं तो ये जाके उसके बाद ये इस तरह से, ये देखिए exactly उसके हेड पे जा रहा है. यहां से f से पास किया और यहां से जाके ये पैरेलल हो गया. This is rule number 3. So we can use all of these rules to construct an image. ठीक है, sometimes only 2 rules can be used. Sometimes the rule number 1 and rule number 3 can be used. ठीक है, it depends on different cases. But you can apply all 3 rules in order to construct an image like this. Is that clear? अच्छा, ये this was rule number 1. ये जो पहला वाला था rule number 1 ये था. This one, this was rule number 2. This was rule number 3. Rule number 1 is if a ray is passing parallel to the principal axis, it will refract to pass through f, through the principal focus, right, or the focal point. कभी आपको रूल नंबर 1 और 3 यूज करना पड़ जाता है, आपको वो कैमरेज में बाजू का सिर्फ इमेज बता देता है और आपसे कहता है कि ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, तो आपको ये एक्सटेंड करना पड़ता है बैक और एफ से पास करवाना पड़ता है. ठीक है, और यहां से आपको एक रे पास करवानी पड़ती है और आपके पास ऑब्जेक्ट बन जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको वो क्या करेगा, वो सिर्फ इमेज दे देगा. दिस इज द लेंस. वो आपको अगर ये एफ है, ठीक है, और आपके पास ये भी एफ है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे आपको कहीं पे जो है वो इमेज दे देता है, राइट. तो आपसे क्या कहेगा कि इट विल आस्क यू टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट. हाउ विल यू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट? Now the only method to draw an object is that one of the rays passing without any deviation, which is like this. ठीक है, वो तो आपके पास ये पास करेगी. और अब आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हेड तो है नहीं कि वो पैरेलल पास करवा के हम वो करें. तो व्हाट यू विल डू इज यू विल पास लाइक दिस एंड देन यू विल, सो यू गेट एन ऑब्जेक्ट हियर, राइट. यहाँ पे गई, इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट बना देता हूँ. तो ये देखिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया. आपने इसको स्ट्रेट किस तरह से किया, इसको यहां से करवा के आपने एफ से पास करवाया और ये यहाँ पे आपके पास इसका जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया. तो यू कैन यूज एनी मेथड, राइट. देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज नोन एज लीनियर मैग्नेट. अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड इफ दिस इज द इमेज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस figure here? What are the characteristics of this image? What are the characteristics of this image? It is inverted, number 1, very good. And it is magnetic. And it is real, yes. A real image is one which you can catch on a screen. A real image is one which you can catch on a screen. For example, this projector here is catching the image on this board, right? Okay?
A real image is one which you can catch on the screen. The real image can be caught on a screen. Remember that. Okay? Is that clear? And there's another very, very important thing here, which is known as linear magnification. And this is something that is often asked in the examination. Linear magnification. Magnification का मतलब होता है कि आपके पास कितना मैग्नीफाई हो रहा है. हाँ, अगर ये 1 से बड़ा होगा इसका आंसर तो वो इमेज ज्यादा बड़ी होगी, और अगर 1 से छोटा होगा तो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी होगी. We'll see that, right? Linear magnification is given by, we write it as small m, and it is the image distance over object distance. It is the image distance over object distance, and you can write the formula here. Linear magnification is equivalent to image height over object height, or image distance over object distance from the optical center. I'm just going to write that. अगर आप इमेज की हाइट मेजर करें रूलर से, आप रूलर से इसकी हाइट मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल ये आती है 3. फॉर एग्जांपल ये हाइट आ जाती है 3 इसकी इमेज की. आप रूलर से मेजर करेंगे और आपने रूलर से ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर की, वो आ जाती है 1.5 फॉर एग्जांपल. तो लीनियर मैग्निफिकेशन हो जाएगी 2. इसका मतलब है वो दो गुना ज्यादा जो है उसका साइज बढ़ गया, राइट? It has, increased its size twice. Is that clear to everyone? Image height over object height. And there's another formula here. And this is, by the way, proved by mathematics using similar triangles. ठीक है? आप similarity को use करके भी ये prove कर सकते हैं कि image height over object height और image distance over object distance. ठीक है? आप लोग maths में, O-level maths में syllabus D में देखें तो similarity का जो chapter है उसको आप use करके कर सकते हैं. For example, we can also write here that linear magnification is image distance from the optical center. This is the optical center here. This one, image distance जो आपके पास है from the optical center over object distance from the optical center. So if this distance is, for example, 9, and for example, this distance is, for example, 4.5 centimeters, you get the same answer, 2. This distance is 9 here. From here till here, it's 9, for example. You measure it with the ruler, and this is what you'll do in the exam. You will measure it with the ruler. And this is 9, and this is 4.5, it will give you 2. Is that clear? Online students? Yes, sir. और एक बात याद रखिएगा that if m is greater than 1, then the object is magnified. And if m is lesser than 1, for example 0.5, 0.2, something like that, right? 0 or 1 के दरमियान, if m is lesser than 1, then object is diminished. The object is diminished. उसका size जो है वो छोटा होगा, right? So I hope you learned the concepts well, and now you'll be able to comprehend the different situations. I'll make another video on this tomorrow, and we'll discuss different cases of lens being used in different things, such as, for example, photocopy machine and projector and magnifying glass. And we'll also talk about the human eye defect, right? Inshallah. See you. Allah Hafiz.